Question 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यहाँ पे हमारे पास एक circular path है. सोनिया और रवि they are driving it on that field. यहाँ पे सोनिया takes 18 minutes, रवि takes 12 minutes. अब यहाँ पे ये starting point उनका है. If this is the starting point, सोनिया इस पूरे फील्ड को कवर करने के लिए 18 मिनट्स लेगी. वापस यहाँ पे क्रॉस करने के लिए शी विल टेक 18 मिनट्स. रवि विल टेक 12 मिनट्स. हमें ये फाइंड आउट करना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. अब सोनिया का एक राउंड, फर्स्ट राउंड शी विल टेक 18 मिनट्स. सेकेंड राउंड शी विल टेक 18 प्लस 18 क्या है 36. थर्ड राउंड 36 प्लस 18 विल गिव यू 54 एंड सो ऑन. फोर्थ ऐसे ही वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पे जाएगी. फिर रवि का फर्स्ट राउंड ही विल टेक 12 मिनट्स. सेकेंड राउंड ही विल टेक क्रॉस इट इन 24 मिनट्स एंड सो ऑन. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन हाउ मेनी मिनट्स इन दोनों सेम टाइम पे ये पॉइंट क्रॉस करेंगे. दैट विल बी LCM ऑफ 18 and 12. ये जो LCM होगा ये हमें बताएगा कि इन विच मिनट दे विल बोथ क्रॉस द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम. Factors of 18. 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are. Factors of 12. 2 6s are 3 2s are 2 1s are. So this can be written as 18 equals 2 multiplied by 3 square. 12 equals 2 square multiplied by 3. LCM will be all the prime factors 2 3 raised to their highest power. 2 का highest power क्या है square है, so this is 2 square. 3 का highest power क्या है 2 है, so this is 3 square. LCM will be 2 square multiplied by 3 square. 2 square is 4 multiplied by 3 square is 9. 4 multiplied by 9 gives you 36. So the answer is 36 minutes. Thank you for watching. Do subscribe to our channel for more videos and more updates.